हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय के नितिन आर्ट चैनल। के नितिन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग ऑफ अ हॉर्स हैज़ बीन डन। इस वीडियो के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वॉचिंग द फुल वीडियो इज़ नेसेसरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में यह आपको सूचित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Only when we know the advantages and disadvantages of handling any medium, we can use it properly and artistically. Since the pencil is a medium of regular use, it is easy to handle colored pencils. कलर पेंसिल से ड्राइंग करते समय अलग अलग प्रकार के पेपर्स के पीसेस पर आप पेंसिल का यूज करके देखना चाहिए और आपके ड्राइंग सब्जेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार कागज का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। जिस पेपर पर आपको कलर पेंसिल का काम करना है उस पर ड्राइंग करने के बजाय किसी दूसरे कागज पर ड्राइंग करना चाहिए और ट्रेसिंग पेपर की मदद से वर्किंग पेपर पर ट्रांसफर करना चाहिए। Draw a rough outline of the subject on a separate sheet of paper with a graphite pencil. It should be ensured that the drawing is flawless in terms of proportionality, perspective, drawing, etc. From this drawing, the picture should be traced on the paper to be drawn with the help of solid outline tracing paper. This method keeps the paper clean and the paint fresh. पेपर पे कलर पेंसिल से जो भी आप काम करते हैं उसे मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि रंगीन पेंसिल में वैक्स वर्णक के साथ मिलाया जाता है। इसलिए मन में ह्यूज और कलर्स की पसंद के साथ पहले पेल शेड्स और उसके बाद डार्क शेड्स का उपयोग करना चाहिए। रंगीन पेंसिल के साथ काम करते समय योजना बनाना आवश्यक होता है। एक ही कलर की एक पेंसिल पर कम अधिक दबाव लगाने से लाइट या डार्क कलर प्राप्त किया जा सकता है। An effect of mixed color tones can be achieved by cross-hatching a pencil of one color over another. With the cross-hatching technique, hatching is layered at different angles. Multiple colors can be used to create interesting color mixes. Both the use of lines as well as the creation of different shades can be easily achieved in this medium so that both drawing oriented and shadow oriented methods can be properly used. Apply high pressure during drawing with the pencil in an almost afraid position to create areas covered completely in intense color.
रंगीन पेंसिल का उपयोग करते समय आकृतियाँ व्यक्त करने वाली रेखाएं रंगों को भी व्यक्त करती है। इस वजह से प्रत्यक्ष चित्रण करते समय ड्राइंग में एक प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह कलर स्कीम का रिकॉर्ड रखने में भी यह मीडियम में आसानी हो जाती है। रंगीन पेंसिल का टॉप थोड़े उपयोग के बाद ब्लंट हो जाता है, इसलिए हमेशा पेंसिल को शार्प रखने की कोशिश करें। पेंसिल का शार्प एज छोटे छोटे डिटेल्स को सटीक रूप से दिखा सकता है। This medium is useful for practice studies, rough sketches for large drawings, as well as perfect artwork. कलर का एक समान क्षेत्र बनाने के लिए पेंसिल को फ्लैट पकड़ के हल्का दबाव डालना चाहिए। हालांकि स्ट्रोक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कागज के स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। रंगीन पेंसिल का उपयोग सुपर व्हाइट कार्टेज, हैंडमेड पेपर, लेदर टेक्सचर्ड पेपर, क्रिस क्रॉस, व्हाइट और टिंटेड पेपर के विभिन्न रंगों पर अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए किया जा सकता है। The tonal value of the original color in the form of gray when any color picture is converted to black and white is the tonal value of that color. A tonal of 9 shades of gray are scaled from a combination of black and white. इस ग्रे स्केल के आधार पर येलो कलर तीसरे शेड के साथ मेल खाता है, जबकि स्केल के छठे शेड के साथ लाल और हरे रंग का मेल है। हालांकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। Different mixed color can be created depending on the order in which the colors are layered. Colors transform a vibrant picture into living atmosphere. The visual effect of combination of two colors are important when combining colors. The colors should make each other stand out. The combination should be done in terms of complete color combination without considering only one color in the picture.
The effect of the shade and light falling on the object is drawn only with the help of shades. This is how the shapes are divided according to the range of shades. लाइट कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं जबकि डार्क कलर ओपेक होते हैं। लाइट से डार्क तक एक दूसरे के ऊपर कलर की लेयर को बिछाने से ब्रिलियंस और वाइब्रेंसी बढ़ती है। इसमें कुछ शेप्स पर लाइटली काम करके कलर की स्पेस निश्चित की गई है। Gradually increasing the darkness of the shades also increased the brightness of the color. लाइट शेड्स, मीडियम शेड्स, डार्क शेड्स और रिफ्लेक्टेड लाइट के इफेक्ट को इलस्ट्रेशन में या फिर ड्राइंग में उचित रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। The uniformity of color is important when creating shades. The thinner the tip of the pencil, the more uniform the shade, while the thicker the pencil, the whiter the texture of the paper. As a result, the color becomes darker and more uniform. Draw the shape by dividing the large size into small line segments. Using a variety of colors that are conducive to color matching makes the shapes in the picture come alive. Finally, colors are the children of light and light is their mother. Some color pencils can be dissolved with paraffin oil and used for painting. Leaving the paper white in highlighted areas is a skill worthy of learning. Through this, we can achieve the dark light composition effortlessly. कलर्ड पेंसिल ये माध्यम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसका उपयोग अन्य माध्यमों के साथ किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी इसका फिनिशिंग मीडियम करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Hybrid colors and effects are the defining factor of this medium. A lot of scope in visual representation is present in color pencils. It can be called a texture-heavy medium. Color pencils can be easily mastered if one has a good hold and experience with monochromatic pencils. Color pencils are just an advanced level of graphite pencils.
Your hand rests on the paper while the paint is working. Keep another piece of paper under your hand so that it does not get smudged by hand. This medium is very convenient when working outdoors, as you do not have to carry any extra load except paper pad, color pencil, sharpeners or blades. The efficiency of this medium in applied work is very beneficial, as the printing of pictures in this medium is very flawless. Butter paper or tracing paper should be kept on the picture when it is completed so that the picture remains safe. Thanks for watching.